quadrillion, quadrillion, universal काल का जय भारत जय विश्व जय India जय Bharat, long live Bharat, long live India and people of this country. I welcome you to my for short talk about quality of citizen, which I've been taking for many days. Quality of citizen is very significant formula for you because it is here. Those citizens, if cannot understand power of citizens in Bharat India, no one can change this nation to be a power in world. One has to be qualitative to make Bharat India a world level community. Open your eyes and your minds, my dear citizens of this country. It's not it's not small thing. I'm just asking you. Quality of citizen is very required, very much required. You can say भारत में सिटीजन्स यदि क्वालिटी नहीं रखता तो इस देश को सुधार नहीं सकता. ये पक्की बात है. हमारे यहाँ क्वालिटी को नहीं वैल्यू दी जाती. हमारे यहाँ सिर्फ कहते हैं काम करके छोड़ो बात खत्म, कैसे भी कर दो. ये जो कैसे भी कर दो की बात है ना, इसे मैं idiotic कहता हूँ. You do whatever you want to do, it is idiotic. No, I don't accept this. One has to do quality work, and not only quality work but also quality life one has to live. It's also very important. If I don't live quality life, then how can ask others to be good for me? If my conduct is good, then of course I will get good conduct from others. If I don't use my levels to that requirement, I cannot expect others to cooperate with me in this regard. It's not only cooperation but also operation. Operation, whatever it is, personal life operation, it is professional life operation, it is national life operation, or whatever sort of operation I do, it should be full of quantity along with quality. When I say quantity, it doesn't mean in square meter or millimeter. This means requirement, satisfaction, contentment. जिस तरह हम चाहते हैं देश को बढ़ाना, वो खाली बातें करने से या ऐसे करने से या ऐसे करने से या ऐसे करने से नहीं आ सकता. ये सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं, इनसे काम नहीं होता. हम मंदिर में खड़े होकर भगवान से प्रेयर कर लें, ऐसे कर लें, ओम लिख दें, कुछ भी कर दें, इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है. क्योंकि सबसे बड़ा ओम यहाँ है, भगवान यहाँ है, धर्म यहाँ है, शांति यहाँ है, गुस्सा यहाँ है, सब कुछ यहाँ है. This is my home. Home in which I'm living, that is my physical home, that is my, you can say, material based home. This body is also my home, which is my soul based home, because this home is my control office, my control soul, central control building, or you can say whatever you can call it. Here I live in to control myself and to control my work, as well as to control if I can do whole world and universe. So I cannot do that. But if I get a chance, I can do that. If those who don't use this, those who don't use this, but those who use this, left heart location, those who use this, they cannot do anything. That's why I say quality lies here. This quality, if works here, my eyes work, my nose work good, my hands work good, that's what I say. So quality cannot be defined in a single line. Quality means complete structure we have to understand. And to extends, if it's related to citizens of a country, this means citizen must be capable to understand what is analyzed. You can be citizen of whatever country, all are same. There is no difference. There can be financial based economics difference, there can be some other difference. As far as quality is concerned, you cannot consider quality in physical terms. So I have all facilities, I can live mechanical life, I can have this, though I'm not talking of that.
I'm talking of what you think about yourself, what you think about your nation, and will think about this whole world, because my first nation is whole world. Many times I speak, I iterate, I am first world level citizen, though I don't need any passport from anybody, because nobody has any power to give me world passport. That can be given by that power, which power is not bound by anybody. वो शक्ति जो ऊपर बैठी है वही वर्ल्ड का पासपोर्ट दे सकती है, और किसी की ताकत नहीं कि आपको पासपोर्ट दे दें। और वो पासपोर्ट मेरे पास है, वो पासपोर्ट आपके पास भी है। यहाँ यहाँ से सब कुछ मिलता है आपको, सारी फाइलें मिलती हैं यहाँ से। और इसको जो समझ गया वो पास हो गया, जिसने इसको नहीं समझा वो दिल के मरीज बन के रह गया। मरीज का मतलब हार्ट अटैक का पेशेंट नहीं है। आई एम टेलिंग स्पिरिचुअली, आई एम नॉट टॉकिंग मेडिकली। Quality cannot be defined very easily. It has to be understood gradually. And quality means you are your own fact checker, you're your own initiator, you have your own power to work, you have your own power to think. That power cannot be overcome by any degree of education. Yes, degree of education helps to think, concentrate to some subject, but that does not give you power to understand. Understanding is natural. Remember, no education can make you understand anything. It is your own soul that you understand using that potential of soul, which is called a spirit. If you are a spirit person, you have a power to move further. Usually people say this person is spirit है, this is not the spirit है, कहते हैं यार इसके बस का कुछ नहीं है, ये सोचता नहीं है, ये करता नहीं है। अरे सोचेगा नहीं, करेगा नहीं तो करेगा क्या? खाएगा पिएगा सोएगा। मैंने क्वालिटी के लिए एक सब्जेक्ट भी लिखा जिसको कहते हैं पावर ऑफ सॉल्व। हालांकि उसका सीधा मतलब इससे नहीं है, वो कोई और टॉपिक है नंबर्स के बारे में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता इस समय। मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी की। आपको क्वालिटी पहले अपनी पहचाननी है, अंडरस्टैंड करनी है कि मेरे पास क्या क्वालिटी है। साइंस यही है, जो भी नेचर में है, प्रकृति में जो भी है, उसको ढूंढना, उसको समझना, उस सिस्टम को जानना ही साइंस कहलाती है। It is available, system is available, it is working, but we have to understand that. Same way, system is working in every human, every creature. We have to understand what I am. I'm not talking this spiritually, but I'm saying I have to understand first what I am, what can I do, what is my past, what I understand from this, what I learn from this, what is my strength, what is my stamina, how much can I work, how much can I think, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मैं कितना शुरू कर सकता हूँ, मैं कितना संभाल सकता हूँ, मेरी कितनी पोटेंशियल है। ये सब बातें कॉमन सेंस की हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है या कुछ जानना चाहता है लेकिन जान नहीं सकता, कुछ जानना नहीं चाहते और जान सकते हैं। अपनी एवेल्यूएशन करना, अपना एस्टिमेट करने के बाद ही आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी डिग्रियां ले ली, अब मुझे क्या जरूरत है, जॉब मिल गया, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं स्काई इज लिमिट। आई वुड से इट इज नॉट ओनली स्काई, इट इज ऑल यूनिवर्सेस लिमिट्स। स्काई तो बहुत छोटी चीज है। जितनी भी दुनिया, जितने भी विश्व बने हैं, जितने भी आप कह सकते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्सेस बने हैं, मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूँ। मुझमें शक्ति हो नहीं हो ये देखने की बात है। एक दिन वैसे भी जाना है सबको। अल्टीमेटली वन डे everyone has to live. Then why to worry about that? When you have come, it is fact. It is evidently fact. I'm not saying scientific fact. It is natural fact that one has to go.
It depends upon what is your time schedule, what is your program, what is your bar chart. We know date of commencement of that life, but we do not know date of demobilization. Or you can say, I was mobilized on this day, which is called date of birth, but I do not know what I I have my day, which day of my demobilization, or so-called termination, or so-called death, whatever you can call it. But between this period, I have to stay in a manner that first I have to satisfy myself. I have to feel that I have done something for this world. जब तक ये फीलिंग मुझ में नहीं आती है, इसका मतलब मैंने कुछ किया नहीं है। सिर्फ जॉब करना, पैसे कमाना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, अपने को स्टेटस वाला कहलाना, ये मैं सिर्फ बेवकूफ़ी समझता हूँ। कोई कहता है जी देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना स्टेटस वाला हूँ, ऐसे आदमी को मैं समझता हूँ इसको पता ही नहीं कि ज़िंदगी क्या है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ समझता ही नहीं है। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, क्या करेंगे उसका? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। जीवन में आपने उस पैसे से इस विश्व के लिए क्या किया? इस विश्व जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम जमीन कहते हैं, अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, अर्थ, अर्थ ही अर्थ देती है। सोचिए आप, नाम अर्थ है। संस्कृत में अर्थ का क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं, वेल्थ, मटेरियल, रिसोर्सेस, ये मतलब होता है। जब अर्थ ही अर्थ देती है और मटेरियल यहाँ पर है, इसका मतलब अर्थ में तो मटेरियल है। हमको यहाँ से मटेरियल तो मिल सकता है, लेकिन हम उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। अर्थ कैन गिव मी मटेरियल, अर्थ कैन गिव एवरीबडी मटेरियल, एंड दैट मटेरियल कैन बी यूज्ड, बट दैट कैन बी यूज्ड ओनली at this place, on this planet. It cannot be made a luggage for me while I live. जब मैं जाऊंगा तो अपने साथ बैगेज नहीं ले जाऊंगा, बल्कि जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, इस शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है, प्रोवन प्रिंसिपल। आप कहेंगे ये बातें क्वालिटी से कहाँ से आ गई? अरे इसी से तो हमको क्वालिटी समझ आएगी कि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, उसका क्या स्टार्ट था, क्या अंत था, उसके बीच में ही तो हम क्वालिटी समझ रहे हैं कि हमें किस तरह की क्वालिटी जीनी है। ना मैं पंडित हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना गुरु हूँ, ना कोई, लेकिन माइंड सब में होता है। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े हैं तो माइंड तो आपका इनिशियल हो गया, माइंड आपका स्टार्ट हो गया, जितना था उससे ज़्यादा स्टार्ट हो गया, आपको फीडबैक मिल गया, एनालिटिक पावर मिल गई। अब आप उसको यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्जी है। आप यूज़ करेंगे तो कुछ पा लेंगे, कुछ सोच लेंगे, यूज़ नहीं करेंगे तो पैसे के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। आप बताइए कितना भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? ज़मीन तो गोल है, बॉल है, कितना भी भाग लीजिए वहीं दोबारा आएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आप कुछ अगर ज़मीन के लिए करेंगे तो भगवान तो आपके साथ रहेगा। कोई भी भगवान जिसको आप मानते होंगे वो तभी आपके साथ रहेगा जब उसकी बनाई हुई चीज़ को आप व्यक्तिगत रूप से हेल्प करेंगे, समझेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और यही तो हर पर्सन का एग्ज़ाम होता है। हमारे देश में कहा जाता है, यू आर अंडर टेस्ट, टेस्ट ऑफ गॉड। It may be tested, it may not be tested, that is different. But we have an understanding that every work you are doing is your test. Every act you do is your test. और वो टेस्ट आपको समझ में नहीं आता है, आपका हो जाता है। कभी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कभी आप खुश हो जाते हैं, देखो मैंने कितना कुछ कर लिया। ना तो इसमें खुश होने की ज़रूरत है, ना इसमें दुख मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना आपके साथ खुशी जाएगी, ना आपके साथ आपका गम जाएगा। जाएगा तो जो आपने किया है वो जाएगा, आपकी सोच जाएगी, आपने जो इस ज़मीन को सुधारने के लिए काम किया वो जाएगा। और सुधारने का मतलब ये नहीं कि हमने मकान बना दिए, हमने सड़क बना दी, हमने ये बना दिया। आपने इसको पहले प्रिजर्व करना चाहिए, उसके बाद इसको डेवलप करना चाहिए। प्रिजर्व तो आपने किया नहीं, दूषित कर दिया इसको, फिर आप इसको कैसे आगे ले जाएंगे? हर हमारे देश का सिटीजन समझे कि वो किसी का गुलाम नहीं है। और ये हमारे ही सिटीजन की बात नहीं है, पूरे विश्व के लोगों की बात है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि हमारा कोई यहाँ स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है।
हम स्वयं के मालिक हैं। अगर हम गुलाम हैं तो स्वयं की आत्मा के हैं, और हम गुलाम नहीं हैं तो स्वयं की आत्मा के नहीं हैं। अब आत्मा कहेंगे आत्मा पे आ गया, मैं आत्मा पे नहीं आया, आत्मा अपने आप आ जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आत्मा बोल रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी आत्मा सोच रही है, जो आप सुन रहे हैं वो आपकी आत्मा सुन रही है, जो आप करना चाहते हैं वो आपकी आत्मा करना चाहती है। ये सब आपकी आत्मा इलेक्ट्रिक करंट की तरह, वोल्टेज की तरह, एम्पेयर की पावर से आपके साथ रहती है। तो क्वालिटी जब तक आपकी सही नहीं हो सकती जब तक कि आपकी आत्मा सही नहीं है। आपकी आत्मा में डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को, उस स्नैक को आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपेल दैट ionization electrons which are within your body. You have to change them, you have to remove those impurities. Only then you can say, I am now to some extent right with my power of soul. इकोनॉमी के पीछे भागना अच्छी बात है, एजुकेशन के पीछे भागना अच्छी बात है, और दूसरे सुधार के, आप कह सकते हैं डिसिप्लिन के पीछे भागना अच्छी बात है। भागना तो पड़ेगा। इकोनॉमी के बिना आप खा नहीं सकते, खेती के बिना आप उगा नहीं सकते। आपका पैसा भी फेल है अगर खेती नहीं है, आपका पैसा भी फेल है अगर ये एनवायरनमेंट नहीं है। क्या करेंगे आप? अगर भगवान ने जो फैसिलिटीज आपको दी हैं उनका यूज़ आप कर रहे हैं तभी तो आप जी रहे हैं। आप उसकी एवेल्यूशन कर ही नहीं सकते। आप यहाँ इकोनॉमी की बातें करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी है, मेरी इकोनॉमी इतनी है। कभी आपने सोचा जो फ्री में आप बचपन से खा रहे हैं उसके कितने पैसे होंगे? कभी किसी ने सोचा है? हवा ने कभी बिल नहीं लिया, रोशनी सूरज की ने कभी बिल नहीं लिया, बरसात ने कभी बिल नहीं लिया, भूचाल ने कभी बिल नहीं लिया। जो भी फैसिलिटी आपको, आप कहेंगे भूचाल फैसिलिटी कहाँ से हो गई? अरे भूचाल भी एक नेचुरल वर्क है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे हमारे शरीर में कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है, जमीन में भी अनबैलेंस हो जाते हैं, तो भूचाल तो आएंगे। लेकिन सहने की शक्ति होनी चाहिए। you have you must have power to digest all these good or bad actions automatically given or automatically happening on earth. Don't blame God, don't blame anybody, because you cannot do anything against them, and you are responsible for that. What responsible you are, you know very well. I need not tell again and again. My dear friends, I am talking about quality of citizens. And if citizen is not qualitative, we cannot do anything. And I know all citizens cannot be quality oriented. That is true. You cannot expect everybody. You cannot expect 100%. Yes, there are some people who believe in it, and there are some people who don't believe it. Even then, it exists. It exists and shall continue to exist. Sometimes I plan to think what I have to do and what I will speak today, what I will talk, and how to check myself. It's continuous process. You don't think what I'm talking to you is just thought today. I'm just thinking now also. I'm talking to you. I did not write any point. I don't want to do that. My soul should tell me, my mind should tell me when I say soul, it is here. It is here. It's on every part in my body. It's everywhere. But analytical power is here. Analytical power of my work, my contemplation, my thought, मेरे विचारों की बात को समझने की शक्ति, everything, every aspect, every relation, every window of that discipline, which is analysis, is here. I call it discipline or a super discipline, because without analysis, nothing can be done. And particularly in my profession, construction, civil engineering, designs, etc., etc., this is required. No construction can be done without this. No design can be done without this. So this is very important factor from point of view of quality working. If I cannot understand this, then I have no right to be called an engineer, no right to be called doctor, no right to be called professional, no right to be called a good human ultimately. I am good human because I think good. If people call you are a positive or not positive, you have to see. Positive means you do everything good for this world. Do not constrain to your home
or your country only, because we all are living on this planet, which is one home, or you can say one station. After this station, where I have to go, I don't know. From which station I come, I don't know. My ticket I can't see. That is what I understand. So, my dear, your very small responsibility is, and also very heavy responsibility is, that you have to assume quality in your life. And quality you have to define yourself. Nobody else will define for you. What your mind says, what your views say, what your vision states, you have to listen to that. आपको सुनना होगा उनको, जो आपके दिमाग में बातें आती हैं, क्यों आती हैं, एनालाइज करना होगा. हो सकता है बातें आपको समझ आए ना आए, वो आपकी बात है. यू हैव टू एनालाइज ऑल दिस फॉर एनालिसिस इटसेल्फ. एनालिसिस लोग समझते नहीं हैं आजकल, करते भी नहीं हैं. जिनको करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं. जर्नल एनालिसिस हम वर्क स्टडीज़ में तो करते हैं, इंजीनियरिंग में मैं वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन लाइफ का एनालिसिस बहुत आवश्यक है. देश का एनालिसिस, अपने राज्य का एनालिसिस, अपने घर का एनालिसिस, समाज का एनालिसिस और अपना एनालिसिस. मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई मुझसे करा रहा है तो क्यों करा रहा है. ये सोच के आप काम करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे. अगर आप देखिए, आपको कहता है जाइए इसको मारिए पीटिए, आप क्या मारेंगे. अगर एनालिटिकल स्टडी करेंगे तो आप नहीं मारेंगे, और आप अंधविश्वास करेंगे तो आप मारेंगे. आप अंधविश्वास करेंगे या एनालिटिकल स्टडी करेंगे, ये आपको देखना है. जब अंधविश्वास की बात आती है, ब्लाइंड फेथ की बात आती है, माई इंटेंशन इज टू से दैट आई कैन नॉट एनालाइज एनीथिंग. वट एवर इज विद मी और आई थिंक दैट इज फाइनल, दैट इज डेस्टिनी, दैट इज आउटकम. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. If I do not use mind, I am called blind faith, blind mind. And my blind mind I don't respect. Everybody's blind mind, every other body's blind mind, I don't respect. Why should mind be blind? Yes, my approach can be blind, but mind should be stronger. I can be conscious person, I can be, you can say, what you call it, soul-based person, but my soul should be is educated soul. It should be analytical soul. It should have power to analyze, not just to accept whatever good or bad or right or wrong without any question. It does not work. That's why quality of citizen is not according to constitution, but according to your own constitution of life. Constitution of life is very important. You believe in whatever you want to believe. Law is law, society is society, but you yourself are different. I am different, you are different, everybody has different understanding, different approach. System is same, legal is same, law is same, formula are same, but my approach can be different. That is what I'm saying. My approach is मेरी मेरी पहुंच अलग है. मैं चाहता हूं जो करना तो करना चाहिए, नहीं चाहता तो नहीं करूंगा. ये बात बहुत समझने की है. हम समझें ना समझें अलग बात है, लेकिन ड्यूटी बनती है, अगर हमने कुछ सीखा है तो उसको एनालाइज करके समझा जाए कि क्या सीखा है, हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमारा क्या पर्पस था, हमारा क्या हम उस पर्पस को सीख के गेन कर पाए हैं, या हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, क्या हम नेचर के विरुद्ध तो काम नहीं कर रहे. मान लीजिए आप नेचुरल मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं, तो ये भी नेचर के अगेंस्ट काम है. भाई अगर मुझे नहीं करना तो मटेरियल क्यों वेस्ट करूँ मैं. बातें बहुत आसान लगती हैं, बहुत मुश्किल भी लगती हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है. ये दुनिया हमें अर्थ देती है, पैसा देती है, लेकिन आत्मा नहीं देती है. दुनिया का मतलब पृथ्वी से है, जिसको हम पृथ्वी माता भी कहते हैं, धरती माता भी कहते हैं, मदरलैंड भी कहते हैं, लिविंग लैंड भी कहते हैं, गॉड्स लैंड भी कहते हैं. ये है. हमें अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को सोचना होगा. पढ़ाई लिखाई पर ही सीमित रहकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई रास्ता खोलती है सोचने का. पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कि मैंने ये डिग्री ले ली तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई. वो सर्टिफिकेट आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन आपकी नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है. कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं बना जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने से
आपकी समझदारी को बनाने से बोर्ड लगा दे नो फर्दर, ऐसा बोर्ड नहीं बनता है, नो फर्दर, बिकॉज इट इज ऑलवेज फर्दर. Your education continues even if you do not go to university. After passing your degrees, you have to learn all days, every day, whatever you can learn, good or bad, you can learn. That is what it is. मैं कंस्ट्राइन नहीं करना चाहता किसी भी एक्सप्लेनेशन में. आई वॉन्ट टू कीप कंटिन्यूस. But I don't know feedback because I'm not getting feedback, and people may not like my way of talking or my way of presentation or what subject I choose. I always choose subject that can change human being for better living, and that is what I think. I am not behind money for this, and I do not behind for fame or celebrity become. No, I'm not interested because I assume my soul tells me that I represent that power which everybody cannot represent. Even selection for that is very difficult. You have to change, you have to struggle in life. But if your struggle goes to just confinement of money earning, then I cannot call it struggle, but that can be called mundane struggle. You are living here. There are people who are living here bodily, but by soul, by mind, they are elsewhere. They're responsible there. Or I should say, in our world, whatever people number we have all times some representatives from God in whatever form. They stay, and they eat. They can't do it. No, those powers which are living in world other than human being and other creatures, they're very strong. They cannot leave this world because they like it. We have to like it. If you don't like world, I'm not a good citizen. You have to like it. Maybe somebody has done crime and in jail, you know, it cannot be changed because that person has done some crime and that crime is to be punished. That's what I say. Quality should not be so strong that can land you in jail. Why? Maybe your working quality was not positive. Maybe your working quality was not positive. It was not destined to some objective area. It was just for pleasure, and you destroyed your habits. You were behind money, you were behind women, you were behind some other objective which was not for you and not for others also. But you were immersed in that and you destroyed your quality. And again, you have to work hard for constructive work. You have to do a lot, you have to think a lot, and do not think in that moment, during that contemplation, that you will make something. Making something is called money making. It's called earning. Earning is one part of life, but not every part of life. So we have to be very serious about our analytical study to be conducted with nature and God. And God is always happy, God is always relieved when human conducts its own soul. And when you conduct soul survey, when you conduct soul, you shall know what is your value in the society. One should have value. If we don't have value, we cannot do anything that is not in favor of ourselves. So, in India country, in our country, my citizenry is little confused. Yes, everybody has to earn. I don't say no. Everybody has to earn for purpose of living because you need food, you need clothes, and you need some residence. So that is a required one, and we have to do that by mind application, by body application, by physical work, by doing mechanical work, or by doing mental work. We may not appreciate when we do it, but ultimately
Everybody has to do it in whatever form. But young people are, you can say, basic and fundamental power of every nation. And we should have also that. If my young generation is not happy with me, my forefather or my fathers did not do it for me, then I would say that that young generation is too young. That is doesn't understand that everybody has to be exit from this country and every country one day, and we should be serious about that issue. And if we can understand that, well, I think it's fine. हमें अपने को स्ट्रांग बनाना चाहिए, हमें अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहिए, हमें अच्छा अपना नेता बनना चाहिए। पॉलिटिकल की बात नहीं मैं कर रहा, अपना नेता खुद। मेरे अंदर भी तो नेता है, मुझे उसको जो उठाना है, उसको मैंने यूज़ करना है, अपने नेता को। आई हैव टू यूज़ माई ओन स्पिरिटेड पावर, स्पिरिटेड लीडर। आई हैव टू यूज़ माई सेल्फ फर्स्ट। If I think that I can use it by experience of failure and successes in life. Failure is always very powerful because it leads to success. Success can be made a failure by just demolition of what work you do. But in this, that your soul is powerful, your soul tells you what you have to do. That is very significant point to remember. Don't be upset with little failure because failure is always called, failure is said that to be the root of success. फेल होना सफलता की निशानी है, क्योंकि बार बार तो फेल नहीं होंगे आप। एक बार हो गए, दो बार हो गए, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, हो गए। क्वालिटी को समझना अपने आप में एक क्वालिटी है। आप काम करेंगे फ्री में, सोचेगा कोई? या फ्री में भी काम कर सकते हैं किसी का? सोचेगा नहीं। और आज के ज़माने में दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। बहुत दिखाते हैं लोग, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, लेकिन होते नहीं, होते नहीं। मैंने ऑब्ज़र्व किया है हमारे सिटीज़न बहुत ईज़ी हो गए हैं हर काम में। पहले स्ट्रगलिंग होते थे, अब रेस्टिंग है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्वालिटी देता है, हमें कहता है कि आपको क्वालिटी से जीना है, यू हैव टू डू दैट। और उसका हम ना ध्यान करके कोई और बात करें, फिर हम उससे डिट्रैक्शन में चले जाते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ दिस विद दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज नॉट डूइंग दैट। Person has to think himself, citizen has to think himself. Don't submit to wrong people. If you want to submit to right people. Don't submit to any profession. You may be professional, you may be professionalist, but fact remains, you are a good also. There is some good part in your body, and there are some bad part in the body. This can be realized, this can be accommodated, this can be understood. Quality of life is continuous process. It cannot be changed. Every day something comes to my mind and I release that, just thinking during speaking, and that is beauty of capacity of beauty of confidence building, which is very important matter, and we have to do that. It is very significant to do that, and if I can't do that, then I'm not right person. I have to be quality person, and I want to see everybody quality person, and quality person only can change quality of nation, quality of world. Of course, many people are rigid, but rigidity also does not pay. In many cases, it does not pay. Reality is a fact, and fact is a reality. No fiction, only fact. And particularly in engineering, it is a requirement. We cannot solely depend upon some report. Say, for example, about air is something written. I shouldn't worry about that. I should worry about how can I do this job myself, how can I understand, and that is really very significant part. And I will be back to you on quality of a civilian issue. So today
Citizenry has no quality, but we have to reinstate that quality which we have lost or which was not existing. If it is not existing, we have to bring it. Otherwise, I'll see you again for quality conference. I know people are not interested in this, but one day you have to be interested. There is no alternative, no alternative, no alternative. Jai Bharat, Jai Prithvi, Jai Hum Sab. Thank you very much. Dhanyavad.